Hello everyone, how are you all? I hope you all are well, and so I am. So friends, as I told you in the previous video, I'll teach you the easy way to speak English. It is only necessary to understand this method. Your thinking and your practice can make it possible. If you listen to it carefully and practice it from today, you can believe that you will start speaking English from today. So let's start our today's lesson without any further delay. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, we have to think about what English is. It's just a language. ये सिर्फ एक ज़बान है. Nothing more than that. इसके अलावा कुछ भी नहीं. So why fear it? तो फिर इससे डर क्यों? Fear, डर. So today we have to promise ourselves that we have to learn this language without any fear. We don't think about what people say about us. We have to give our full attention to our work. I hope you will follow it. आपने देखा मैंने आपको समझाते हुए कई बार I have to का इस्तेमाल किया. You see, I used I have to many times while explaining to you. We use this phrase to do any work. किसी भी काम को करने के लिए हम इस फ़िक्रे का इस्तेमाल करते हैं. For example, we will put this phrase before whatever we have to do. यानी हमने जो भी काम करना हो उससे पहले हम ये फ़िक्रा लगाएंगे. मैं उर्दू में आपको साथ में इसलिए बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. जिन लोगों को इंग्लिश की समझ नहीं आती तो उनके लिए मैं उर्दू में भी समझाती हूँ. I think you understand what I mean. So let's practice these sentences written on the board. हमने I have to के साथ verb को जोड़ना है. We have to combine verb with I have to. You can see I have written a lot of verb on the board. Today we will contact each verb with it because we do different things every day. So we need their English too. Our first sentence is I have to go. आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने एक साइड पर I have to लिखा है और दूसरी साइड पर मैंने बहुत सारे verbs लिखे हैं. ये वो वर्ब हैं जो हमारी डेली लाइफ में रोज़ यूज़ होते हैं. यानी अगर हमने कोई खाना हो, पीना हो, उठना हो, जागना है, हमारा कोई भी काम है, वो सब वर्ब कहलाते हैं. दे आर ऑल वर्ब. क्योंकि हमारी इंग्लिश आई हैव टू के साथ हमने सिर्फ इस वर्ब को जोड़ना है और फिक्रा हमारा कंप्लीट हो जाएगा. यानी आई हैव टू गो, मुझे जाना है. आई हैव टू ईट, I have to pay. I have to call. I have to talk. I have to rest. I have to ask. I have to fix it. I have to help. I have to visit. I have to reply. I have to explore. I have to prepare. I have to improve. यानी कुछ भी आपने बोलना हो. आई हैव टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, आई हैव टू इम्प्रूव माई राइटिंग, आई हैव टू अरेंज, आई हैव टू ऑर्गेनाइज, आई हैव टू मीट यू, आई हैव टू रिमेंबर, आई हैव टू कंप्लीट, आई हैव टू स्टार्ट, आई हैव टू प्लान, आई हैव टू गिव, आई हैव टू पैक, आई हैव टू स्टॉप, I have to work. I have to cook. I have to think. I have to read. I have to clean. I have to finish. I have to solve it. I have to learn. I have to drive. I have to check. I have to teach. I have to find. I have to sleep. I have to watch. I have to speak. I have to take it. I have to submit. I have to create. I have to choose. आपने देखा
हमने एक साथ कई फ़िक्रे सीख लिए हैं। बस आप इसी तरह और फ़िक्रे बनाने की कोशिश करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बाकी सब लाइक और शेयर कर दें। इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।